A very good morning. This is Vidika Kapoor, a student of Vikramshila IAS Coaching Institute, 14 Biga Rishikesh, and today I'll be presenting the preamble in front of you. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, to assure the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the day 26th of November 1949, do hereby adopt, enact, and to give to ourselves this Constitution of India. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बोधता बढ़ाने के लिए अपने इस संविधान सभा में दृढ़ निश्चय होकर 26 तारीख नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।